Okay, so Assalamualaikum students. So let's get started with IGCSE Physics, May June 2023, Paper 2, Variant 2. This is an MCQ paper, 45 minutes का paper है. Let's get started with this. Okay. A force of 2 Newton and 3 Newton act at right angles. ठीक है, 3 Newton और 4 Newton की forces लग रही हैं at right angles. What is the resultant force? Now resultant force किस तरह calculate करते थे बेटा? If you have to calculate the resultant vector, how do you do that? First of all, can you realize this is the head of vector x? This is the tail of vector x. Can you also further realize ये 4 न्यूटन वेक्टर का हेड है, ये 4 न्यूटन वेक्टर का टेल है. Can you currently realize that 3 न्यूटन वेक्टर का टेल is connected with the 4 न्यूटन वेक्टर का टेल? हेड टू टेल रूल इज नॉट बीइंग सेटिस्फाइड. बेटा करेंटली जो 3 न्यूटन वेक्टर है उसकी टेल इज कनेक्टेड विद द 4 न्यूटन वेक्टर की टेल. हेड टू टेल rule is not being satisfied. So what we can do is we can take the 4 Newton vector to the top side like this. You can take the 4 Newton vector to the top side like this. Perfect. ये आपका टेल आ गया, ये आपका हेड आ गया. Can you now realize the head of 3 Newton vector is connected to the tail of the 4 Newton vector? Can you make the resultant vector? Yes. This is your resultant vector. What will this be equal to? Resultant vector किस तरह निकालोगे? 3 का square plus 4 का square under root. Your resultant vector comes out to be 5 Newton along line O. Y. C is your answer. Resultant vector बेटा क्या आ गया? 5 Newton along line O. Y. Let's move ahead. A light ball is held at rest at the top of a tall cliff. Okay. It releases and falls through air. ठीक है, air present है. Eventually reaching terminal velocity. Perfect. Which row describes the behavior of the ball as it descends? बेटा हमेशा याद रखो, once you have reached terminal velocity. या चलो मैं पूरा सिनेरियो बता देता हूँ. Let's say this is the top of a cliff. When you drop a ball from the top of the cliff, बॉल पे सिर्फ और सिर्फ वेट की फोर्स लग रही होगी. बेटा इफ यू ड्रॉप अ बॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टॉल क्लिफ, बॉल पे सिर्फ और सिर्फ वेट की फोर्स लग रही होगी. इफ ओनली द फोर्स ऑफ वेट इज बीइंग अप्लाइड, द एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू जी. तो आपकी इनिशियल एक्सेलरेशन इन द टर्मिनल वेलोसिटी वाला सिनेरियो इज ऑलवेज जी. कैंसल आउट ऑप्शन ए एंड बी. Sir, what happens once I have reached terminal velocity? Once you have reached terminal velocity, आपकी downward force of weight balances out the upward force of air resistance. बेटा जब आप terminal velocity reach कर जाते हो तो weight की force is equal to the air resistance. Resultant force becomes zero. Your acceleration will become zero. C is your answer. फाइनल एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल क्या हो जाएगी? जीरो. इनिशियल एक्सेलरेशन क्या? इक्वल टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज जी. लेट्स फर्दर मूव अहेड. द ग्राफ रिप्रेजेंट्स द मोशन ऑफ द कार. हाउ फार हैज द कार मूव्ड बिटवीन 0 and 5 seconds? बेटा 0 और 5 seconds के बीच में हमने कार का डिस्टेंस निकालना है. हाउ विल यू कैलकुलेट दैट? डू यू रिमेंबर दैट एरिया अंडर the speed time graph is equals to distance. Area under the speed time graph is equals to distance. Can you calculate this area under speed time graph? Yes. हाँ जी कर सकते हो ये calculate. Yes. This area under the speed time graph will be equal to the area of the triangle. 1 upon 2 into the base, that is 5, into the height, that is 10. This becomes 1, this becomes 5. The distance traveled is 25 meters. The area under speed time graph is 25 meters. C is your answer. Which statement about mass or weight is not correct? कौन सा statement about mass or weight is not correct? Mass is a force. This is incorrect. बेटा mass जो है वो force नहीं होता, weight होती है force. C B is incorrect.
A sphere P made of steel has a weight of 10 Newton on Earth. Another sphere Q made of steel has a weight of 10 Newton on Mars. ठीक है. The gravitational field strength on Earth is greater than the gravitational field strength on Mars. Which statement is correct? बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इसको थोड़ा सा थ्योरेटिकली समझाता हूँ, फिर मैं इसका मैथमेटिकल एक ब्यूटीफुल सा प्रूफ देता हूँ. लेट्स से आप अर्थ पे हो एंड दिस इज मार्स. On both Earth and Mars, your weight is 10 Newton. Weight is 10 Newton. Let's suppose Earth की gravitational field strength is 9.8 and the gravitational field strength on Earth is greater than the gravitational field strength on Mars. Let's say I am just assuming कि gravitational field strength on Mars is 4. मैं सिर्फ assume कर रहा हूँ कि gravitational field strength on Mars is 4. What will happen? Beta, if I calculate the weight of mass of both the objects, mass of the object on Earth into gravitational field strength, 10 is equals to mass 9.8. 10 divided by 9.8. Mass निकालो क्या आ रहा है बेटा? 1 second, let me calculate it. 10 divided by 9.8. The mass here comes out to be 1.02 kg. बेटा अर्थ पे जो ऑब्जेक्ट है या स्फेयर पी का लेट सपोज मास आ रहा है 1.02 kg. दिस इज जस्ट एन assumption. व्हाट विल बी द मास ऑफ स्फेयर क्यू? ये तो स्फेयर पी का मास आ गया, स्फेयर क्यू का मास क्या होगा? आई हैव अज्यूम्ड द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ मार्स टू बी 4. तो हम ये कर लेते हैं W इज इक्वल टू एम जी. वेट 10 है, मास हमने निकालना है G4 है, मास कम्स आउट टू बी 2.5 kg. बेटा क्या आप रियलाइज कर सकते हो फॉर द सेम वेट ऑन अर्थ एंड मास, for the same weight on Earth and Mars, since the gravitational field strength of Earth is greater compared to the gravitational field strength of Mars, Mars पे आपका जो mass होगा that will be greater compared to the mass on Earth. वापस से समझा देता हूँ. many things are here might get complicated. देखो वेट ऑफ अर्थ क्या है 10, वेट ऑफ मार्स क्या है 10. ठीक है. देर इज अ स्फेयर पी ऑन अर्थ जिसका वेट है 10 न्यूटन. देर इज अ स्फेयर क्यू ऑन मार्स जिसका वेट क्या है 10 न्यूटन. लेट्स अज्यूम अर्थ पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है वो 9.8 है. मार्स हैज अ लेसर ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ देन अर्थ, लेट्स से 4. आई कैलकुलेटेड द मासेस ऑफ बोथ पी एंड क्यू. तो मास ऑफ पी आ गया 1.02 kg, मास ऑफ क्यू आ गया 2.5 kg. Which statement is correct? The mass of sphere P is the same as no. The mass of sphere P is less than the mass of sphere Q. B is your answer, as you can see from calculation, beta. कि mass of sphere P is less compared to the mass of Q. Now this is for those students who like to work hard. Now for the students who are a little geniuses who can focus a bit. Do you remember this equation? Weight is equals to mg. Let's bring mass to the downside. Can you also realize आपका weight क्या है? Constant है. If your weight is constant, this gives you a relationship 1 over mass directly proportional to G. Mass is inversely proportional to the gravitational field strength. This means what? If the gravitational field strength of Earth is greater compared to that of Mars, the mass of the object on Earth's surface will be less than the mass of the object on the surface of Mars. तो इस तरह से आप छोटा सा रिलेशनशिप बना के भी कर सकते थे. इफ़ यू कैन आइडेंटिफाई कि यहाँ पे वेट कांस्टेंट हो रहा है, मास विल बिकम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ. लेट्स फर्दर मूव अहेड. Which two quantities must be known to determine the density of a material? Mass and volume. B is your answer. आगे आ जाओ.
A truck is towing a car along a straight horizontal road at constant speed. Perfect. ठीक है भाई, ट्रक पे constant speed से चल रहा है ट्रक. What does that mean? The forward forces, let's say forward forces FF will be equal to the backward forces. बेटा जब भी आप कांस्टेंट स्पीड पे चल रहे होते हो, योर फॉरवर्ड फोर्सेस इक्वल्स टू द बैकवर्ड फोर्सेस. द रोप ब्रेक्स, अच्छा जी ये रोप ब्रेक हो गई है, परफेक्ट. Which row shows the direction of initial acceleration of the truck after the rope breaks and the reason for the acceleration. बेटा अगर ये rope break हो रही है, what will happen? The truck will start to accelerate towards the right. अगर रोप ब्रेक हो जाती है बेटा तो ट्रक क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा टूवर्ड्स द राइट. ए एंड बी गेट्स कैंसिल आउट. व्हाई, व्हाई इज दिस द केस? क्योंकि द ड्राइविंग फोर्स becomes greater than the resistive forces on the truck. C is your answer. ठीक है, let's move ahead. Okay, let's see this question. A uniform beam is pivoted at its center and two identical masses x and y are placed so that the beam balances. बेटा beam balance का मतलब क्या हो जाएगा? Anti-clockwise movement will be equal to clockwise movement. Let's further examine. This object y has a weight wy acting downward, which generates a clockwise movement. This object x has a weight wx acting downwards, which generates an anti-clockwise movement. ठीक है. Currently आपके clockwise and anti-clockwise movement are equal. बेटा currently आपके anti-clockwise movement are equal to clockwise movement. Now let's say a small mass is added at the position shown. अब ऐसा हुआ है बेटा कि हमने यहाँ पे एक small mass place कर दिया है. This small mass will have some amount of weight. Yes, this will generate an additional anti-clockwise movement. बेटा ये जो small mass है, this will have a weight and this will generate some additional anti-clockwise movement. आपका anti-clockwise movement will become greater than the clockwise movement. How can the masses be positioned so that the beam balances again? बेटा अब अगर आपने बीम को बैलेंस करना है, देयर कैन बी टू थिंग्स दैट यू कैन डू. आप कोई भी एक कर सकते हो. देयर कैन बी टू थिंग्स दैट यू कैन डू. आइदर रिड्यूस द एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट और इंक्रीज द क्लॉकवाइज मूवमेंट. बेटा अगर आपको वापस इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करना है तो या तो आप एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को रिड्यूस कर दो या क्लॉकवाइज मूवमेंट को इंक्रीज कर दो. ओके. इफ यू मूव x अवे फ्रॉम द पिवट, अगर आप x को पिवट से अवे मूव कर दो, व्हाट विल हैपन? लेट्स से x इज एट दिस पोजीशन, द डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट इंक्रीजेस. बेटा अगर आप x को अवे फ्रॉम द पिवट मूव करते हो तो व्हाट विल हैपन? दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस हैज इंक्रीज्ड. और अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, मोमेंट इंक्रीज हो जाएगा. और ये कौन सा मोमेंट इंक्रीज हो जाएगा? Anti-clockwise movement. If you move x away from the pivot, which type of movement will increase? Anti-clockwise. We don't need that. हमने तो anti-clockwise movement को decrease कराना है. If you move x towards the pivot, if you move x towards the pivot somewhere here, the distance will decrease. The anti-clockwise movement will decrease. Equilibrium will be re-established. B is your answer. आगे बढ़ते हैं बेटा. A resultant force of 2 Newton acts on an object of mass 3 kg for 6 seconds. What is the change in velocity of the object? Do you remember this formula? Resultant force is equals to change in momentum over time. Resultant force is equals to mass into change in velocity over time. Resultant force क्या है बेटा? 2. Time क्या है? 6. Mass है 3. Can you calculate the change in velocity? 1, 2. The change in velocity comes out to be 4 meters per second. 9 का आंसर comes out to be C. आगे बढ़ते हैं बेटा.
The diagram shows the energy stores for a mobile phone and how the energy is transferred between stores. अच्छा ये energy stores हैं for a mobile phone and how the energy is transferred between stores. What describes how the chemical energy is transferred? बेटा chemical energy किस तरह transfer हो रही है? Chemical energy gets converted into what? Electrical work done. This electrical work done gets converted into internal energy and kinetic energy. A is your answer. आगे बढ़ते हैं बेटा. A wind turbine is 30% efficient has an output electric power of this. What is the power input? हमने power input निकालना है. How will we do that? एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? पावर आउटपुट डिवाइडेड बाय पावर इनपुट इनटू 100. एफिशिएंसी क्या है? 30%. व्हाट इज योर पावर आउटपुट? 2.5 megawatts. आई एम नॉट प्लेसिंग इन मेगा का प्रीफिक्स बिकॉज ऑल द आंसर्स इन मेगा. तो हमारा जो आंसर आएगा वो मेगा में ही होगा. ये पावर इनपुट आ गया मल्टीप्लाइड बाय 100. कैन यू कैलकुलेट द पावर इनपुट? 2.5 divided by 30 into 100. Power input comes out to be 8.3 megawatts. B is your answer. Simple. आगे बढ़ते हैं. Which two physical quantities must be used to calculate power developed by a student? Power का क्या फॉर्मूला होता है? Work done over time. ठीक है, अगर आपको वर्क डन और टाइम मिल जाए तो आप पावर निकाल सकते हो. डी इज योर आंसर. अच्छा जी. द डेंसिटी ऑफ सी वाटर इज दिस. परफेक्ट. द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज दिस. The atmospheric pressure is this. At which depth in seawater is the total pressure due to the atmosphere and the water equal to this? अच्छा जी. बेटा टोटल प्रेशर आपका ये है. Do you remember total pressure is equals to the atmospheric pressure plus the pressure of the liquid? टोटल प्रेशर क्या है? 13000. एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है बेटा? 1000 plus pressure of the liquid. Can you calculate the pressure of the liquid? Yep. 101 is equals to the pressure of the liquid. 51300 minus 10100. The pressure of the liquid comes out to be what? 412000 pascals. ठीक है. Pressure of the liquid comes out to be 412,000 या 412,000 is your pressure of the liquid. Now, how can you put a formula here? Pressure of the liquid is equal to 412000. Density of the liquid, gravitational field strength into height is equal to 41200. बेटा डेंसिटी ऑफ द लिक्विड क्या है? यहाँ पे आ जाओ. डेंसिटी ऑफ द लिक्विड क्या है? 1030. ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या है? 9.8. कैन यू कैलकुलेट द हाइट एच? यप. 41200. हाइट एच आ जाएगी. यस. 412000 डिवाइडेड बाय 1030 इंटू 9.8. बताओ आंसर क्या होगा बेटा? 1030 into 9.8. Your height h comes out to be 40.8 meters. Your height h comes out to be 40.8 meters. 13 का आंसर is A. आगे बढ़ते हैं बेटा. Four students describe the phrase absolute zero during a lesson on the particle model. Which student is correct? This is the lowest possible temperature. Yep, that's correct. Absolute zero is your lowest possible temperature. Four students are asked to state and explain the relative magnitude of thermal expansion of solids and gases. अच्छा जी, आपने thermal expansion बतानी है of solids and gases. Which student is correct? Gases expand more than solid because the molecule na. The gases expands more than solid because the attractive forces between the molecules are much weaker in gases. B is your answer. That's why gases expand more. बेटा गैस इसलिए ज़्यादा expand करती हैं because gases के बीच में intermolecular forces are very weak. 4 cups A, B, C, D contain hot coffee. Which cup keeps the coffee warm for the longest time?
बेटा कौन से कप में आपकी कॉफी जो है हॉट रहती है या वार्म रहती है फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम? हमेशा याद रखो, इफ यू हैव वाइट सरफेसेस आर व्हाट? पुअर emitters ऑफ हीट. इफ यू हैव पुअर emitters ऑफ हीट, आपकी कॉफी ज्यादा देर तक गर्म रहेगी. एंड इफ इट इज कवर्ड विथ अ लिड, देयर विल बी नो हीट लॉसेस एज वेल. सी इज योर आंसर. आगे बढ़ते हैं बेटा. अच्छा जी. द डायग्राम शोज अ वेव. व्हाट आर द एम्पलीट्यूड एंड वेवलेंथ ऑफ द वेव? एम्पलीट्यूड क्या है बेटा? द डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजिशन टू द मैक्सिमम पॉइंट, दैट इज 3 सेंटीमीटर, इज योर एम्पलीट्यूड. सी और डी कैंसिल कर दो. वेवलेंथ क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट, दैट इज 8 सेंटीमीटर. बी इज योर आंसर. आगे बढ़ते हैं. Optical fibers are used to transmit digital signals using infrared radiation. The refractive index of the fiber is 1.5. Which row describes the digital signal and gives the speed of the infrared radiation in the fiber? बेटा डिजिटल सिग्नल क्या होता है? दैट कैन कंटेन ओनली टू वैल्यूज. ठीक है. डिजिटल सिग्नल क्या होता है बच्चे? दैट कैन कंटेन ओनली टू वैल्यूज. The refractive index of the fiber is 1.5. Okay, so do you remember the formula of refractive index? The speed of light in air divided by the speed of light in any material, let's say fiber in this case. Refractive index है 1.5. Speed of light in air क्या है? 3 into 10 is the power of 8 divided by the speed of light in fiber. Can you calculate the speed of light in fiber? Yes, 3 into 10 is the power of 8 divided by 1.5. The answer comes out to be 2 into 10 raised to the power of 8 meters per second. A is your answer to question 18. आगे बढ़ते हैं. Which statement describes monochromatic light? Which statement describes monochromatic light? A light of single frequency. A is your answer. A beam of light consists of yellow and blue light. The beam of light is incident on a glass prism. Which diagram is correct? अच्छा जी, कौन सी डायग्राम करेक्ट है फॉर अ ग्लास प्रिज्म? बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल ऑप्शन ए और बी को बिल्कुल कैंसिल कर दो. बिकॉज कभी भी जब लाइट प्रिज्म से एयर में जा रही होती है, इट नेवर मूव्स टूवर्ड्स द टॉप साइड. कभी भी ऐसा नहीं होता. आइदर सी सही होगा या डी सही होगा. नाउ डू यू रिमेंबर दिस एक्रोनिम? विब ग्योर. ऑलवेज रिमेंबर, ये एक्रोनिम ही अब बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा. दिस इज वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड. बेटा हमेशा याद रखो, इन दिस एक्रोनिम violet bends the most, red bends the least. और as you move down the acronym, bending क्या करती है? डिक्रीज करती रहती है. So if you humbly realize, the blue color will bend more. ये देखो ब्लू ज्यादा बेंड हुआ है. दिस इज ओनली एप्लीकेबल इन ऑप्शन डी. येलो विल बेंड लीस्ट. 20 का आंसर इज डी. आगे बढ़ते हैं. A radio station broadcasts a signal with a frequency of this. What is the wavelength of the signal? बेटा रेडियो स्टेशन में जो रेडियो वेव्स यूज होती हैं, उनकी स्पीड क्या होती है? 3 into 10 is the power of 8 meters per second. Your frequency is this. Can you calculate the wavelength? Yes, V is equals to f lambda. 3 into 10 is the power of 8. Frequency is 89 megahertz. That is 10 is the power of 6. You calculate the wavelength. 3 into 10 is the power of 8. 89, 10 is the power of 6. Can you calculate the wavelength? Wavelength निकालो बच्चा, क्या आती है? 89 into 10 is the power of 6. The wavelength comes out to be what? 3.37 meters. That is roughly 3.4 meters. 21 का आंसर is B. आगे बढ़ते हैं बेटा. A boy shouts. Okay, so this is your boy. Okay, this is your tall building. Perfect. चलो अब सवाल को पढ़ो जरा. A boy shouts and hears the echo from a tall building 2.2 seconds later. So here you are shouting, the sound goes.
hits the tall building, returns back. बेटा आपका बॉय शाउट करता है, साउंड जाता है, बिल्डिंग पे हिट करता है, रिटर्न बैक करता है. दिस टोटल थिंग is taking a time of 2.2 seconds. The speed of sound is this. Okay, 330 meters per second. Can you calculate how far the boy is from the building? Anji, can you calculate how far is the boy from the building? ये distance निकालना है अपने. This. You have to calculate this distance of one time from the boy to the building. Let me highlight it as well. You have to calculate this distance of one time from the boy to the building. How will you do that? First of all, let's apply the simple formula. Distance is equal to speed into time. Speed क्या है 330, टाइम क्या है 2.2. What does your distance comes out to be बेटा? Distance क्या आ जाता है 330 into 2.2. Distance comes out to be 726 meters. But there is a problem. The 726 meters is the complete distance बेटा. ये 726 meters क्या है? Complete distance है of the boy to the building and then from the building to the boy. ये दो दफा का डिस्टेंस है. This is the distance of the boy to the building and from the building to the boy. But you only have to calculate the distance of one time, that is from the boy towards the building. How will you do that? Calculate करो ये 726 divided by 2. This comes out to be 363 meters, which is C is your answer. आगे बढ़ते हैं. Which diagram shows two magnetic field lines drawn correctly? Magnetic field line always emit from the north, go inside the south. A is your answer. Magnetic field lines हमेशा north से emit होती हैं, south के अंदर enter होती हैं. A is your answer. A plastic rod is rubbed with a dry cloth. The rod becomes positively charged. Why has the rod become positively charged? हाँ जी, rod positively charged क्यों हो गया बेटा? Anything becomes positively charged if it loses electrons. C is your answer. 24 का answer turns out to be C. Which statement about electric current in a conductor is correct? In a DC current, the electric no. In a DC current free no. In an AC current, the current remains exactly the same all the time. No. In an AC current, the flow of charge changes direction continuously. Yes. Alternating current में AC current में आपका direction of current changes continuously. Okay. A piece of metal wire X with a uniform diameter has a resistance of R. ठीक है, ये इस wire की resistance आ गई R. A second piece of wire Y is made of the same metal and has a uniform diameter. Perfect. Y has double the cross sectional area and half the length. What is the resistance of Y? बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस बात को समझो. If your length is becoming half, what will happen? अगर आपकी length half हो रही है, what will happen? Do you remember? Resistance is directly proportional to length. If your length halves, your resistance will also half. And double the cross sectional area. Sir, what do you mean by that? Double the cross sectional area का क्या मतलब है? If your area is doubling, do you remember? Resistance is inversely proportional to area. अगर एरिया डबल हो रहा है दैट मीन्स रेजिस्टेंस विल फर्दर हाफ. रेजिस्टेंस वाज ऑलरेडी आर ओवर 2. फर्दर डिवाइड कर दो 2 से, इट विल बिकम आर ओवर 4. इज योर आंसर. आगे बढ़ते हैं बेटा. अच्छा जी, सो लेट्स लुक क्लोजली. The electric fire is connected to a 240 volt supply and transfers energy at a rate of this. This is your voltage. This is your power. You have to calculate the charge that passes through the fire in 1 hour. Time भी आ गया आपके पास. So better, do you remember this formula? Voltage is equals to work done over charge. Yes sir. Work done कैसे निकालें? Energy कैसे निकालें? Do you also remember this formula? Power is equals to work done over time. पावर को अगर आप टाइम से मल्टीप्लाई कर दोगे यू विल गेट द वर्क डन. पावर है यस 1 किलोवाट. 1 × 10⁻³ व्हाट इज द टाइम? 1 hour, that is 60 minutes in 1 hour, 60 seconds in each minute. What does your work done? Turns out to be
This equals to 3.6 10 raised to the power of 6 joules is your work done. Place your work done here. You already have the voltage. Can you calculate the charge? Yes. एक काम करते हैं, इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, यहाँ पे रख देते हैं. नाउ वोल्टेज इज इक्वल टू वर्क डन क्या है? 3.6 10 raised to the power of 6 डिवाइडेड बाय चार्ज. वोल्टेज की वैल्यू गिवन है, यस 240. 240 is equals to 3.6 10 raised to the power of 6 divided by charge. Can you calculate the value of charge? 3.6 10 raised to the power of 6 divided by 240. Calculate करो भाई, क्या आंसर आता है? The charge comes out to be, charge is equals to 15,000 coulombs. C is your answer. आगे बढ़ते हैं. Two lamps are connected in parallel. Okay, two lamps are connected in parallel. Which switches must be closed so that both lamps light up? बेटा कौन कौन से switches close करने पड़ेंगे for both lamps to light up? Switch 2, switch 1 close होगा. Switch 3 will also be closed so that both the lamps light up. D is your answer. यहाँ पे आ जाओ. The diagram shows a circuit that switches on a lamp when there is a change in the environment. Okay. Which change in the environment causes the lamp to be switched on? First of all, देखो लगा हुआ क्या है. This is a thermistor. This is a normal resistor. Let me write it. This is a thermistor. This is a normal resistor. This is a relay. You can say this is your lamp. Okay. So what can happen is लाइट इंटेंसिटी वाले ऑप्शंस तो बिल्कुल ही कैंसिल आउट हो जाएंगे बिकॉज लाइट इंटेंसिटी डजेंट इफेक्ट थर्मिस्टर. ओके. नाउ लेट्स अज्यूम देयर इज अ इंक्रीज इन टेम्परेचर. हम अज्यूम कर लेते हैं कि योर टेम्परेचर इंक्रीजेस. व्हाट विल हैपन? द रेजिस्टेंस ऑफ द थर्मिस्टर क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस ऑफ द थर्मिस्टर decreases. As the resistance of the thermistor decreases, the voltage across the thermistor will decrease. As the voltage across the thermistor decreases, the voltage across the resistor increases. As the voltage across the resistor increases, this coil become magnetized, relay closes, आपका bulb जल जाएगा. D will be your answer. आगे बढ़ते हैं. A step down transformer is 100% efficient. It has an input voltage of this and an output voltage of this. The current in the primary coil is this. You have to calculate the current in the secondary coil. How will you do that? Do you remember this formula? Vp over Vs is equals to Is over Ip. What is your voltage in the primary coil? 240. What is your voltage in the secondary coil? 60. What is your current in the primary coil? We don't know. 0.5. 4 into 0.5. Current in the secondary coil is 2 ampere. 30 ka answer comes out to be C. Simple as that. Let's further move ahead. Okay, the diagram shows the pattern of a magnetic field due to the current in a straight wire. Can you see the current is going into the page? Can you see the current is going into the page? Whenever current is going into the page, it will always develop clockwise magnetic field lines. बेटा जब भी current into the page जा रहा होगा, it will always develop clockwise magnetic field lines. Okay, so which row is correct? You have to state the direction of magnetic field. कोई clockwise direction में है magnetic field? Yes, why? A cancel out हो जाएगा, C cancel out हो जाएगा. What is the relative strength of magnetic field? The closer you are to the magnetic field, the stronger it is. The magnetic field will be greater at Q because it is closer to the wire compared to P. Simple. In which device is magnetic effect of current not used? इलेक्ट्रोमैग्नेट में यूज होता है, लाउड स्पीकर में यूज होता है, रिले में. पोटेंशियल डिवाइडर में वी डू नॉट यूज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट. Okay, fission and fusion are two types of nuclear processes. How does the total mass of nuclide produces compared with the total mass of the original nuclide or nucleids in these nuclear processes? बेटा सिंपल सी बात ये है, we have to compare the mass of products with the mass of reactants.
ठीक है, फिजन और फ्यूजन में टोटल मास ऑफ फिजन प्रोडक्ट्स कंपेयर टू द ओरिजिनल न्यूक्लियाइड या द ओरिजिनल रिएक्टेंट्स क्या होता है? फिजन में भी आपका मास कम होगा एंड फ्यूजन के प्रोसेस में भी आपका मास विल डिक्रीज। सर व्हाई? दोनों प्रोसेसेस में आपका जो प्रोडक्ट का मास होगा दैट विल बी लेस देन द ओरिजिनल न्यूक्लियाइड और द रिएक्टेंट्स। सर व्हाई इज दैट द केस? दोनों टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस में, फिजन में, फ्यूजन में, आपका जो मास ऑफ द न्यूक्लियाइड होगा that will be greater compared to the mass of the products. Why is that the case? This is the case because in both of these processes energy is released. दोनों processes में क्या हो रहा है? एनर्जी रिलीज हो रही है। दिस एनर्जी रिलीज कैसे आती है ये एनर्जी? हाउ डज दिस एनर्जी गेट्स रिलीज? दोनों प्रोसेसेस में, फिजन में, फ्यूजन में जो एनर्जी रिलीज हो रही होती है, this is due to the mass getting lost. Mass gets converted into energy, you can say that. ठीक है, दोनों प्रोसेसेस में, फिजन और फ्यूजन के प्रोसेसेस में, आपका मास गेट्स कन्वर्टेड इनटू एनर्जी. सो इन बोथ प्रोसेसेस द mass of the products is less than the original mass of the nuclides. Which nuclei are isotopes of the same elements? Isotopes होने के लिए you must have the same number of protons. X and Y have the same number of protons. B is your answer. Which change occurs in the nucleus of a radioactive atom during beta emission? अच्छा जी, बीटा emission के दौरान क्या होता है? A neutron transforms into a proton and an electron. You can write this as a key point as well. बीटा emission में हमेशा आपका न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है बेटा. A radioactive isotope has a half life of 8 days. Okay. A detector close to a sample of this isotope gives a count rate of 200. Okay. Without the source, the background count rate is this. What is the count rate due to the source after 8 days? आपने सिर्फ source की वजह से count rate बताना है after 8 days. So your initial count rate is 200 minus 20 background radiation. Your original count rate comes out to be 180. आफ्टर 8 डेज, आफ्टर वन हाफ लाइफ, ये काउंट रेट आधा हो जाएगा, 90 काउंट्स पर मिनट हो जाएगा. बी इज योर आंसर. एंड प्लीज डोंट ऐड बैक द बैकग्राउंड रेडिएशन. बेटा यहाँ पे टेम्पटेशन आपको होगी कि आप बैकग्राउंड रेडिएशन ऐड बैक कर दो, लेकिन प्लीज नहीं करना. वाई? बिकॉज यू ओनली हैव टू गिव द काउंट रेट ड्यू टू द सोर्स, ड्यू टू द रेडियो एक्टिव सोर्स. Which statement about the solar system is correct? All planets are rocky? No. Only the Earth has a moon? No. Pluto is a dwarf planet? Yeah, that's correct. Comets are bodies which orbit the sun in the solar system. Comets का shape of orbit क्या होता है? Elliptical. A और B cancel out. And sun is not at the center. Which nuclear reaction produces the release of energy to power the star? Fusion of hydrogen into helium. D is your answer to question 39. आगे बढ़ते हैं बेटा. What is the definition of Hubble's constant? Hubble's constant की क्या definition होती है? The ratio of speed of the galaxy divided by what? The ratio of the speed at which galaxy is receding from the Earth to its distance from the Earth. This is your Hubble space constant key definition. A is your answer. This was kind of a tricky paper. If you have any questions, you can ask in the comments below.